set the context of today's ceremony, I have a couple of short videos to play for you. The total duration of the videos is not more than 4.5 minutes, but this will give us a clear idea of the importance of EOBI and why is it important that all the three pillars, the government, the employer, and the employee, why we say that all the three pillars are equally important and need to be equally strengthful and strong. So let's watch the videos to set the context. Big hand because they are all registered and they form a very strong pillar when it comes to the employer's side. What we have decided is that we have divided all the contributors into 25 categories, and out of each category, top 5 we invited here today to acknowledge with shields and say thank you, but also to talk about some challenges, because after the 18th Amendment, after the devolution, we see a lot of hiccups, and the reason we all have gathered. Zulfikar Bukhari Sahab, Secretary, Overseas Pakistani and HRD, Engineer Amir Sahab, Chairman, EOBI, Azhar Hamid Sahab, Iqbal Khan, my colleague in the Board of Trustees from, he's the employee representative from KPK, distinguished employers, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is a great honor and privilege for me to be attending and given an opportunity
to express my views on the first ever annual Pension Day ceremony. And I must congratulate the whole team of EOBI under the chairmanship of Azhar Saab and the efforts of the operations, the DG operations Akil Siddiqui Saab, who made it possible for this event to be held in such circumstances that the whole capital is almost at siege, under siege. This event will not only help in encouraging and appreciating the employers who are contributing, it will also create a lot of awareness in the people who are reluctant to, the employers who are reluctant to enroll more and more of their staff in this benefit scheme. EOBI has come a long way since its inception, and it has seen its share of lows and highs. But I would like to tell everybody in this August occasion that I have been associated with this institution since 2013 as the member of Board of Trustees. And I have learned a lot about this institution, and I have seen it very near and dearly, that what's wrong with the institution, what has been, what happened actually in the last few years brought a very bad name to the institution, unfortunately. And there were a lot of scandals. And it was a challenging task for all the members of the Board of Trustees how to tread the path, because at one end there were investigations going on by the investigating authorities, and on the other end people expected that the new management and the new board would take out EOBI of the turmoil. So Alhamdulillah, I'm proud to say today that I think all the board members worked very selflessly, and the management we got was also very good and supportive. And from the government side, Alhamdulillah, things have been going well. So now I think the institution. यकीनन आज का ये फंक्शन बहुत ही मुनफरिद फंक्शन है, और मेरे ख्याल में EOBI की हिस्ट्री में इस किस्म के तकरीबात तो बहुत सारे हो चुके होंगे, मगर इस किस्म की यूनिक तकरीब जो है वो हमें देखने में नहीं मिली है। यकीनन मैं समझता हूँ कि वो जो कहते हैं कि अल-कासिब व हबीबुल्लाह मेहनत कश अल्लाह का दोस्त होता है, तो यकीनन इस हवाले से वो लोग बड़े अज़ीम होते हैं जो अल्लाह के दोस्तों का एहतराम करते हैं, उनके हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, उनको सहूलियात बहम पहुँचाते हैं। तो यकीनन ऐसे लोग काबिल तहसीन होते हैं और बहुत ही काबिल एहतराम होते हैं। आज यहाँ पे जितने भी सनतकारों को मदऊ किया गया है, ये बात हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि इस मुल्क के अंदर ऐसे भी लोग हैं जहाँ वो मज़दूरों के हकूक़ का एहतराम करते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं। और यकीनन EOBI ने ख़ुसूसन हमारा जो चेयरमैन साहब है, इसके आने से हम समझते हैं कि उनके जो एक्टिविटीज़ उन्होंने जो EOBI के अंदर शुरू की है, बहुत सारे पेचीदगियाँ जिनका सामना था मज़दूरों को, उसको दूर करने की कोशिश की है और कर रहे हैं। तो आज भी EOBI की मैनेजमेंट ने ये जो स्टेप उठाया है बहुत ही काबिल तहसीन स्टेप है। और मेरे ख़्याल में यहाँ पे बैठे सनतकार भाइयों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग यकीनन अज़ीम लोग हैं, काबिल एहतराम है, और ये इस बात का सबूत है कि आज आपको यहाँ पे मदऊ किया गया है कि आप EOBI के अंदर अपने एम्प्लॉइज़ के हवाले से जो उनका कंट्रीब्यूशन बनता है वो पूरी ईमानदारी से देते हैं। मगर बहुत सारे सनतकार ऐसे भी हैं कि उन्होंने अपने इदारों को बिगाड़ के बनाया है। तो मेरे ख्याल में इसके अंदर EOBI अकेला
कुछ भी नहीं कर सकते, न उनके पास इतने वसाइल हैं और न उनके पास इतने इख्तियारात हैं। मगर Bismillahirrahmanirrahim. Honorable SAPM Sayyid Zulfikar Bukhari Sahab, Secretary OB and HRD Engineer Amir Sahab, officials, distinguished guests, more so in the sense the employees' representatives, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Although the ritual by Tawsi has already been done, but it's certainly a privilege for me to actually appreciate, recognize and acknowledge the fact that the employees' representative, you have made it to this occasion, especially in special circumstances in Islamabad. So let's once again give them a big hand. Today is a unique occasion. Probably in a context, it's a historic occasion because this is the first time we are holding this Pension Day celebrations, I would say, because we would like to appreciate, would like to recognize the fact that although it's a tripartite arrangement where you have got EOBI as a regulator, where you have got employers and where you have got employees, but unless the employers pay up, we won't be able to give this social benefit, the pensions to the insured persons. So once again, thank you very much for making it to the occasion. I've got some brief talking points so as to apprise this August audience that what sort of challenges and what sort of reforms we intend to do in the coming months. And hopefully what we are today, we won't be today, we would be definitely a better organization in the months to come. Just a brief about what exactly the EOBI does, Employees Old Age Benefit Institution. We were created under an Act of Parliament in 1976, and we pay old age pension, survivor pension, invalidity pension, old age grants, and of course, estate pensions. For some years, maybe 6-7 years down the line, EOBI unfortunately was always in the news for all the wrong reasons. But I think that is probably the thing of the past. And I'm very confident the way things are turning out and the way we are being led by SAPM, the dynamic leadership we have at the ministry, at the secretary level. I'm very confident that it's just the start. And inshallah ta'ala, you would see that EOBI would be going from better to best from here onwards. Some of the highlights which we have been able to achieve at the end of this year, that is the fiscal year 30th June. The collection in terms of contribution. Now people say that we have got a depressed economy and we are going through trying circumstances, but still we were able to generate a record contribution of 20.75 billion on 30th June. Now that is something. And again, this is something which should be appreciated because unless the employers paid up, we wouldn't be able to generate that kind of contribution amount. And that becomes a benchmark for the next year, and the next year target is 25 billion plus. So hopefully we'll be able to achieve more than that. Then just the settlement of claims. During the year, we were able to settle more than 33,000 pension claims. Then at the same time, one has to understand that the contribution was 20.75 billion. What was the pension payout? The pension payout was in excess of 33 billion rupees, and which is to be appreciated in the context that when this government came, they gave a raise in pension to 6,500, and given the situation, given the improvement we are going to bring about, I think I'm confident that the increase in pension
would be there. It's just a matter of time, and the way we work out our financial equations, of course, as I see it, it's down the line, it is there in terms of increase of payment. When and how it would be done, that would be announced by SCDM as we tell them and as we are ready to roll out. And the income generated from the investment portfolio. So what happens when the employers, they pay us the contribution over a period of time? We have created an investment portfolio, and by investments in terms of Pakistan investment bonds, the long-term investments, the real estate investments, and of course the equity sides of investments, we have been able to generate a surplus. And right now, as I speak, our book value of EOBI in terms of its investment portfolio, it's close to 400 billion rupees. And if we take it to market value, that is quite substantial. So given the situation, there's nothing to worry about in terms of how EOBI is placed in terms of its funds. But yes, we have to do certain things, and we have to create more opportunities for this investment portfolio to inflate to such a level that we are able to serve more pensioners. We have increase in pensions, and of course, we are able to provide them more facilities. Now, I'll be talking about the challenges. Now, some of the challenges my colleagues in our Board of Trustees, Dr. Yusuf and Mr. Iqbal, they are very aptly, and I think something which is very close to their heart, because when we sit in the BOT, they always point out that, you need to increase the pension, you have to look on the pensions plight side of things. Yes, I do agree, but then there are certain challenges with which EOBI is faced. And one is that of the 18th Amendment. Ladies and gentlemen, we all know that it's a devolved subject. 2009 May 18th Amendment आई थी, and as such the law is frozen. So when you talk of amendments, we want to increase the pension. There are certain things which we have to go through the law, amend it, and then probably be in a position to actually roll out those facilities. Plus, इकबाल साहब ने मेंशन किया था कि 2005 के रेट्स पे हम चले गए. हुआ ये था कि 2005 onwards, the government of the day, they increased the minimum wage rates through the finance bill, money bill, and that exercise was carried out for good 7-8 years. But in 2013, the Supreme Court struck it down, and the rates, they went back to 2005. Now, this is something very interesting and encouraging in the sense, when I say encouraging, because some of the organizations are paying at the rate of 170 at a minimum wage rate of 3,000, which was way back in 2005. Some of the organizations are paying at a rate of 480. There is another band, and some of the organizations are paying at a minimum wage rate of 13,000. That comes to 780 per person. So if I look at my database, I see that 53% of the employers, they are paying at the rate of 780 rupees. The rest, 47%, they are paying at different rates. So my request to the employers and those who are sitting in the audience, there may be situations, although they have been regular contributors and in terms of size, they have been huge contributors, but they are paying at different rates. So the minimum wage rate at which we were at the previous year, that was rupees 13,000, and the calculation per contribution per employee comes to 780 rupees. So I would encourage the employers, those who are not at this rate, please do that, because if the contribution increases, the pension increases. The resultant benefit to the pensioner increases. So it's something which is a social responsibility. We need to understand that this pension contribution, it's a social benefit. It's not a cost of doing business, and it's not a tax. So it's more of a social responsibility on the part of the employer, managed through a legal framework, that if they pay up, obviously the workers' situation in terms of pension would improve. Although 47% of the employers are below the minimum rate of 780 rupees,
But it goes to the credit of Government of Pakistan that the minimum minimum pension which we pay is 6,500. Now, if one were to ask me legally, if somebody is paying at the rate of 170 rupees, the pension payout comes to 1,100 rupees. But that's not the case. The Government of Pakistan actually realizes, appreciates, and sees the plight of the retired workers, and they are being paid at a minimum pension rate of 6,500. Now, that is what I see as a reciprocation of social responsibility contribution from the Government of Pakistan. So let's just appreciate the Government of Pakistan. I just talked about the investment portfolio. We are making efforts to actually transform EOBI from just a regulator towards a service-oriented organization. And if some of you happen to see the newspaper, we have launched an EOBI transformation initiative. It's a massive, massive project which entails certain systems, and within those systems there are subsystems which would ensure that our contribution, it has to improve. Right now there's a shortfall of 11 billion rupees in terms of contribution and the pension payout. But with this ETI initiative, which I understand the rollout should start from January, because we've done the pre-qualification, we've gone through the process of EOI, we are about to float the RFPs, and from January onwards we'd be launching full scale into this project. And 6 months down the line, the contribution is definitely going to improve, because the way we have designed it, the employees registration, and mind you, we're talking about the formal sector, we're not talking about the informal sector right now. Just to make it more knowledgeable, the labor force survey of 2017-18 says that the formal and informal sector of our labor is 78% vis-a-vis 22%. When we talk of 22%, that's what we are talking about right now. 78% is unregistered. Now that has to be brought into the pension scheme. And how we are going to do it, we have got plans, and inshallah, with the passage of time, we are going to give you more details, and perhaps SAPM, when he comes and addresses this audience, he would be able to tell you more about that. Then, what we have done, we have sort of brought in structured management, where we are dealing with KPIs, key performance indicators, and we are setting targets within our regions to boost up the contribution. So it's not being done in an informal way. Right now, what we are practicing is ambiguous management by objectives, and all regions are geared up towards certain targets. For the target for this year, that is 2019-20, is rupees 25 billion minimum. And with the rollout of ETI, I'm very confident that we are going to definitely cross this benchmark. The KPIs with which we are working were basically, we are giving weightage to the collection of contribution, registration of employees, registration of employers, and then recovery of arrears. There's a huge backlog which we have been able to recover, and then settlement of pension claims, because there's one side in terms of getting the contributions, the pension claims. The law says that we should be able to settle a claim within the 45 days when the claim is launched formally. But unfortunately, that's not the case. Normally, it takes on an average around 6 to 7 months. But within this service delivery orientation, which we are having within this transformation initiative, which we have launched, we are going to ensure that we have a database. We are going to reach out in advance when a person is retiring, and by the date or by the time he or she retires, we would be there to actually give them the pension claim. So it should be technically, from my point of view, T+0. So with the minimal of delay. So that means the day he retires, he or she, on the corresponding day, he should be given the pension. Then our resolve is not to reduce the pension, but that is dependent on the fact that the contribution increases.
We, on our part, we are making whole-out efforts to increase the contribution, but then at the same time, the employers who are here to get the medals and they get their shields, my request to them would be to ensure that they consistently, regularly pay the amounts on minimum wage rates so that we are in a position to roll out the pension payments on an incremental basis. So if it is 6,500, I am quite confident, inshallah, within a short span of time, it should be in 5 figures, if not more. Finally, I would like to thank my team. It has been a wonderful experience working with EOBI institutions, human resources. And the fact that in a short span of time we were able to host this occasion, although there were certain advice from certain quarters that we can delay it, but we wanted to make it happen, and just to show our resolve that if we want to do something, we would do it. So thank you very much, the EOBI team, for making all this arrangement. And once again, thank you very much, SAPM, Zulfi Bukhari Saab, for gracing this occasion to come up and actually see for yourself that things are getting serious at EOBI. And we have not changed 100%, but the process of change has already begun, and it is for the better. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Secretary साहब, आपको चेयरमैन EOBI, आपकी पूरी टीम को, एम्प्लॉयज़ रैप इकबाल खान साहब आपको, एम्प्लॉयज़ रैप यूसुफ सरवर साहब आपको, आप सबको, एम्प्लॉयज़ इन पर्टिकुलर जो यहाँ आए हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनीज, बहुत बहुत मुबारक हो, and welcome to EOBI's first ever pension day. ये एक बहुत मैं समझता हूँ मुबारकबाद दिन है कि चेयरमैन EOBI ने ये पहला EOBI का पेंशन डे रखा है। ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि जैसे इन्होंने बात की कि EOBI के साथ सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिविटी जुड़ी हुई थी, करप्शन, प्रीवियस गवर्नमेंट्स की, एक डिसेबल्ड किस्म का इंस्टीट्यूशन जिसमें लैक ऑफ कैपेसिटी भी थी, डर भी था, और उसको सही तरीके से मैनेज भी नहीं किया, और वो भी इस ऐसा फ़ंड था जिसकी स्केलेबिलिटी अगर हम सही तरीके से पिछले 10 सालों में करते तो आज एक एम्प्लॉई को कितने पेंशन की जो अमाउंट होती वो मैं समझता हूँ आसानी से मिनिमम वेज के बराबर होती। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने एक कितने अच्छे इदारे को जिसके पास कितने ज़्यादा असासे हैं और स्ट्रीम्स और रेवेन्यू हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया और सिर्फ नुकसान दिया, और आखिर में नुकसान 2 लोगों का होता है। वो एम्प्लॉई का तो होता ही है क्योंकि उनको अपनी पेंशन उस लेवल की नहीं मिलती जितनी होनी चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयर को भी होता है क्योंकि उसको सिस्टम में डिस्ट्रस्ट नज़र आता है। वो फिर अगर देना भी चाहे वो रुक जाता है क्योंकि वो समझता है कि मैं गवर्नमेंट को क्यों दूँ, मैं एम्प्लॉय को क्यों दूँ, ये पैसे उसके पास जाएंगे नहीं, ये या तो चेयरमैन साहब के पॉकेट में जाएंगे या मिनिस्टर्स के पॉकेट में जाएंगे। तो उनकी गलती भी नहीं है कि वो होता भी यही रहा है। तो ये दोनों साइड से नो विन सिचुएशन क्रिएट की गई। मैं सेक्रेटरी साहब को और ख़ास तौर पर चेयरमैन साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि किस तरीके से इनने इस इंस्टीट्यूशन को बाय द हॉर्न्स इनने पकड़ के उसको एक फिर से एक ज़िंदा इंस्टीट्यूशन बनाया। लोगों को समझ आई है कि यहाँ हम लोगों की बेहतरी के लिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई की बेहतरी के लिए काम करना चाह रहे हैं। इसमें हमारा एक विज़न है, एक ख्वाब है इंशाल्लाह, कि मैंने पहले भी बोला है कि हम इस अगले 4 साल में हमारा एक ख्वाब है कि हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह, कि हम जो आपकी जो पेंशन है उसको हम ज़रूर 15,000 रुपये पे जो आपका मिनिमम वेज है उसके बराबर हम लेके आएंगे, चाहे जो भी हो।
मैं सबसे पहले एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि पहले भी मैं बोलूँ कि हमारा इंस्टीट्यूशन हमेशा परफेक्ट था और अभी भी परफेक्ट है, तो ऐसी बात नहीं है। इसमें बड़े मसले थे जो ठीक हुए हैं, कई मसले हैं जो नहीं ठीक हुए हैं अभी तक ठीक करने। एक सिस्टम है, एक डेकेड्स सालों का एक मलबा हमारे पे गिरा हुआ है जो हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम वहाँ पहुँचेंगे। तो उसमें हमें आपका एक तो भरोसे की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त एक चेयरमैन EOBI है, एक बहुत ही ऑनेस्ट मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी है, तो आप भरोसा कर सकते हैं इस इंस्टीट्यूशन पे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ अपने एक कंट्रीब्यूशन भी होता है, लेकिन आप अपनी एक्सपर्टीज़ लेके आएँ कि हम इसको वाकई कैसे बेहतर कर सकते हैं। चेयरमैन साहब ने आपको बताया कि हमारा जो अगला जो विज़न है कि हम इसको डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके जाएं, कि जो एक पहले या अभी भी कई जगहों पे शायद होता हो कि EOBI का ही रिप्रेजेंटेटिव जाके कभी कभी इंडस्ट्री के मैनेजर के साथ या मालिक के साथ डील करता है, आता होता है कि ठीक है आपके 100 एम्प्लॉइज़ हैं, आप 50 के दे दें और ये दे दें, और मैं वो चला जाता वापस घर। इसका सलूशन, मेन सलूशन इसका ये है टेक्नोलॉजी हम लेके आएँ, अवेयरनेस क्रिएट करें, आप लोगों को दिखाएं कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, वेलफेयर के लोगों में। जो आप पैसा जो देते हैं ये इस्तेमाल एम्प्लॉईज़ से होता है, इनकी पेंशन्स में होता है, तो इनसे जो दुआ निकलती है, आपने वीडियोस देखे हैं कि किस हालात में वो रहते हैं, फ़िज़िकल मेंटल, इनमें इनकी डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं बीच में, तो जब इनकी दुआ निकलती है तो दैट्स ग्रेटर दैन एनी फीजिबिलिटी एंड एनी प्रोजेक्शन दैट यू कैन हैव इन अ बिज़नेस। तो जो पाकिस्तान, जो PM खान साहब के जो विज़न में है, वो ये पाकिस्तान है कि हम ख़ास तौर पे जो सबसे मिनिमम वेज पे और जो काम करते थे उनको हम सहूलत दें। पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाएं जो उनके लिए खड़ा हो, उनके लिए खड़ा होगा, वो आपके लिए खड़े होंगे, आपके लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देंगे। और फिर एक रिलेशनशिप, जो ये ट्राईपार्ट रिलेशनशिप है, जो चेयरमैन साहब बात करना चाह रहे थे कि ये बड़ा ज़रूरी है कि हम करें। तो हमारी तौर पे बल्कि हमारी कंप्लेंट सेल भी है, EOBI के अंदर भी है, मिनिस्ट्री के अंदर भी एक कंप्लेंट सेल है, कॉल सरज़मीन, वो भी है, और ख़ास तौर पे PM साहब का अपना कंप्लेंट सेल यूनिट है। मैं चाहता हूँ कि आप वो कंप्लेंट सेल यूनिट इस्तेमाल करें अगर आप समझते हैं कि किसी किस्म की ब्लैक मेलिंग या करप्शन हो रही हो, या आपको अंडर द टेबल किसी EOBI के एम्प्लॉयर ने बोला हो कि आप डील करें, आप कंप्लेंट करें उनका, हमें कंप्लेंट दें और इंशाल्लाह 48 आवर्स में उस कंप्लेंट को हम आपके सामने उसकी तहकीकात करके आपके सामने रखेंगे। तो प्लीज़ इस कंप्लेंट सेल का फ़ायदा उठाएं कि अगर आप समझते हैं कि कुछ ऐसा हो रहा है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि, और मैं ये कहता हूँ कि बड़ी अफसोस बात है कि एक फ्रोज़न एक्ट की वजह से डेवोल्यूशन आ गया, तो चंद कुछ आई थिंक चेयरमैन साहब रहा था 46-47% रफली ने डिसाइड किया कि वो सबसे मिनिमम पेमेंट दें, 170 रुपये महीने का, जो 1100 रुपये बनता है सिर्फ महीने का बनता है और साल का बनता है, तो 111 रुपये पे वापस चले गए, ये समझ के कि ये शायद 18th अमेंडमेंट के बाद डिज़ोल्व हो जाएगा और ये बच जाएंगे और उनको 5-6 साल तो इसी फ्रोज़न एक्ट के नीचे इनके पैसे बचेंगे, और इंशाल्लाह, और जब खुदा न खास्ता डिज़ोल्व हो गया तो फिर उनको पता है कि क्या होना है इस इदारे के साथ, तो फिर वो वहाँ भी अगले 10 साल से बच जाएंगे। मैं आपको ये ख़ास तौर पे कहता हूँ कि इन 4 सालों में ऐसा नहीं होगा, और ये CCI में जाएगा। मैं ख़ास तौर पे PM साहब से उनसे मिन्नत करके बोलूँगा कि ये डिज़ोल्व नहीं होना चाहिए। ये एक अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा इदारा है जो हिट हुआ है 18th अमेंडमेंट और डेवोल्यूशन की वजह से, ये इसको नुकसान पहुंचा है, और मेरी रिकमेंडेशन बिल्कुल ये, और ये CCI में भी जाएगा, तो मैं ज़्यादा इस पर बोलना नहीं चाहता, लेकिन इंशाल्लाह हम पूरी तरीके से कवर्ड हैं कि ये डिज़ोल्व नहीं होगा। और मैं ये भी आप लोगों को आज कह दूँ कि जिन एम्प्लॉयर्स ने 46% वाला रूट लिया हो,
میں آپ سے بھی اقبال خان صاحب آپ سے بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کے لیے جو بھی ان کا شارٹ فال ہے پچھلے 2-3 سالوں میں، جب بھی یہ ڈیولیوشن بھی ختم ہو اور جو بھی جب سے ان نے یہ واپس گئے ہیں 170 روپے 1100 روپے مہینے کے، میں ان شارٹ فال کلیم کے پیچھے آؤں گا کہ وہ واپس لے کے جائیں یہ 780 روپیز مہینے کے. تو میں وہ لیگلی تھرو کورٹس میں ان کو شارٹ فال کے ان کے پیچھے جاؤں گا. سو اگر یہاں انٹرنیشنل کمپنیز ہیں تو آئی ول جسٹ ریپیٹ اٹ ان انگلش that we request all international employers and companies that have the exposure and the benefit of working in various countries around the world. There's no reason why Pakistan would be any different from any other country. You always have to pay the right amount of taxes in other countries. It's not even a question that's asked. There are forms of tax efficiency, but effectively you will have to pay what the government asks. So if there is any national or international company that unfortunately has gone into that bracket of 46% and only paid 1100 rupees a month, I just want to say as behalf of the government that once this CCI and devolution is resolved, I will come for those companies legally through the courts to fill that gap and that shortfall that they've been doing for months and years, because this money doesn't belong to neither you or me. This belongs to the employees, and it's the duty of the government to actually take that task of fulfilling it. میں واپس آتا ہوں EOBI کے جو چیئرمین صاحب نے بات کی تھی انفارمل اور فارمل اکانومی کی. میں نے پہلے بھی چیئرمین صاحب نے ایک زبردست کام کیا کہ ہمارے 4 ایسے پروجیکٹس ہیں جو تقریباً ختم ہو گئے ہیں لٹیگیشن سے. ایک ہم نے بلکہ OEC ٹاور ہم نے پچھلے ہفتے اس سے پچھلے 2 ہفتے پہلے ہم نے انوگریٹ بھی کیا ہے, اس کو رینٹ آؤٹ بھی کر دیے. وہاں مطلب اگر وہ 8 سال سے یا 7 سال سے پھنسا ہوا تھا لٹیگیشن میں, ایسے گرے اسٹرکچر کھڑا ہوا تھا, مطلب 150 کروڑ کی ہمارا نقصان ہوا ہے صرف وہ ایک پراپرٹی میں. اور ایسی کچھ ہمارا کچھ اس سے زیادہ بھی کچھ 18 پراپرٹیز ہیں ہماری. تو مطلب یہ پوٹینشیل ہے EOBI میں. تو ایسی 3 اور پراپرٹیز ہیں انشاءاللہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 3 مہینے میں ہم اس کو لٹیگیشن سے نکال کے اس کی ٹینڈرنگ اور ان کو بھی کمرشلائز کر دیں گے انشاءاللہ. اور میں چاہتا یہ ہوں, لیکن اس کی میتھس مجھے دیکھنی ہوگی کہ انشاءاللہ جب یہ 4 کے 4 ہم نے کمرشلائز کر دی ہوں تو انشاءاللہ میں تب اناؤنس کرنا چاہتا ہوں ایک گورنمنٹ کی سپورٹ سے, جیسے کہ آپ فرما رہے تھے کہ گورنمنٹ کی سپورٹ سے پھر سے ایک انکریز ہمارے پینشن فنڈ میں کہ ان کی انکریز 6500 سے ہم اوپر لے کے جائیں جب یہ باقی 3 بھی انشاءاللہ کے 3 مہینے میں ختم ہو. انفارمل اکانومی میں انفارمل امپلائمنٹ میں صرف یہ بات تھی کہ بڑا ضروری ہے کہ پینشن فنڈ کو ایک پینشن فنڈ سکسیزفل تب ہوتا ہے جب اس کی ایک ماس اپیل ہو. اٹس اے نیومیریکل گیم. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے ابھی چیئرمین صاحب نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے 70% آپ کی امپلائمنٹ انفارمل ہے, تو ان کو وہ فارمل کیوں نہیں ہونی چاہیے. میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں جو آپ کے ملازم ہیں گھر میں, جو عورتیں خواتین جو کام کرتی ہیں انڈیویجولی سیلف امپلائڈ جو ہوتی ہیں, اور جو مرد جو سیلف امپلائڈ ہوتے ہیں, ان سب کو ایک موقع ملنا چاہیے پینشن میں. تو انشاءاللہ ہم اس ایک اویئرنیس کیمپین جس کے لیے جب یہ پراپرٹیز ہمیں ہمارے پاس فنڈس تو ہیں اس کے لیے, لیکن ایک بہت بڑا ہم ٹی وی سوشل میڈیا اویئرنیس کیمپین بھی شروع کریں گے جب ہم انفارمل امپلائمنٹ EOBI کے اندر لے کے آئیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ 70% پوٹینشیل آپ کے پاس ہے اس پینشن فنڈ کو گرو کرنے کے لیے. تو اگر آپ کے پاس 1000 امپلائیز ہیں ملک میں, تو اس کا مطلب ہے کہ 700 امپلائیز آپ کے پینشن فنڈ میں تو آتے ہی نہیں, جس کے آپ کے پاس جو ہے بھی ہمارے ایک ینگ پاپولیشن 65% بلو دی ایج آف 35, تو ان کی اگر آپ پینشن وہ ابھی سے اگر پینشن دینا شروع کر دیں تو آپ سوچیں کہ پینشن فنڈ کو کتنے پیسے ملیں گے. مطلب کہ ان کے پاس تو 30 سال سے زیادہ ان کے پاس ہوگا صرف پینشن دیتے ہوئے, اور وہ ان لوگوں کے کام آئیں گے جن کو پینشن کی ضرورت ہے. تو اس میں پوٹینشیل اتنا ہے اس ادارے میں, لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 10 سالوں سے ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں. تو انشاءاللہ انفارمل امپلائمنٹ کو ہم لے کے آئیں گے, بلکہ
चेयरमैन साहब हमने ये भी करना है कि हमने जो हमारे जो बाहर का ओवरसीज़ का डायस्पोरा है उसको हमने इंगेज करना है कि उसको भी मौका मिले कि वो अपनी बाहर से जो उसकी अर्निंग्स होती हैं वो उसको पेंशन की तरफ दे यूबीआई को, और फिर उसको भी मौका मिले कि जब वो वापस पाकिस्तान आए और जब उनकी रिटायरमेंट आती है उनको भी यूबीआई की पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे उतने ही चाहे मीडिया की बात सुनते हैं कि ओवरसीज़ गद्दार हैं सारे, लेकिन वो भी इतने पाकिस्तानी हैं जितने हम हैं, तो उनके लिए भी हम इंशाल्लाह उनको हम लेके आएंगे। मैं फिर से एम्प्लॉयज़ का ख़ास तौर पे कि बीइंग इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी इज़ अ ह्यूज encouragement to us. We're extremely honored that you have joined us today. और एम्प्लॉयज़ को भी, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी, चेयरमैन साहब मैं फिर से आपको ख़ास तौर पे, क्योंकि मुझे पता है कि कितना प्रेशर आया है जब हम EOBI को ठीक करने गए, ये यहाँ से स्क्वीज़ करते थे, यहाँ जुल्फ़ी बुखारी पे मीडिया अटैक्स शुरू हो जाते थे, तो ये ऐसा एक माफिया, ऐसा एक टास्क है जो हमने लिया है, लेकिन मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ सेक्रेटरी साहब, आपको, पूरी मिनिस्ट्री को, कि ये खड़े रहें। मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह अभी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है और इंशाल्लाह अगले 4 साल में हम पूरी ये मेहनत करेंगे जो खान साहब की विज़न है, जो उनके पहले दिन से उनकी चीज़ थी। मैं एक वाक़या खाली आपके साथ छोड़ के जाता हूँ कि मैं कुछ महीने 2 पहले लंदन जा रहा था, तो मेरी सिर्फ एक दो दिन के काम थे, तो मैंने खान साहब से पूछा था अगर मैं 3-4 दिन ज़्यादा गुजारा हूँ और अपना दफ्तर भी देखा हूँ और थोड़ी सी रिलैक्स भी कर लूँ, तो मैंने बोला था कि मेरे पास मौका होगा कि मैं चलूँ भी, पार्क्स में जाऊँ, सोचूं कि आगे क्या करना है, ये वो, तो आप बताएं कि कोई ऐसे और कोई टॉपिक्स या और कोई डिपार्टमेंट जो आप कहते हैं कि मैं देखूँ तो मैं उस पर सोचूं, तो मुझे बता दें कि क्या करूँ। उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी कि बस यही सोचो कि तुम जो हमारा जो गरीब तबका है उसके लिए तुम क्या बेहतरी कर सकते हो और बाकी डिपार्टमेंट्स में क्या कर सकते हो, तो यही मैसेज है जो ऊपर से सिर्फ। तो फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, चेयरमैन साहब आपको, सेक्रेटरी साहब आपको, बोर्ड को, आपको, एम्प्लॉयज़ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। EOBI का सबसे पहला पेंशन डे आप सबको बहुत मुबारक हो। थैंक यू। भाई साहब, फर्स्ट गोल्ड मेडल के लिए हम दावत देंगे जो भी रिप्रेजेंटेटिव आए हैं उस इदारे से, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, इलेक्ट्रिक, अच्छा गोल्ड मेडल के साथ शील्ड भी है, के इलेक्ट्रिक, उसके बाद HRSG आउटसोर्सिंग, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, के इलेक्ट्रिक, गोल्ड मेडल, शील्ड और सर्टिफिकेट। टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स। अब हम दावत देंगे HRSG आउटसोर्सिंग, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट OGDCL, Sui Northern Gas Pipelines, Aga Khan Hospital Medical College Foundation, Utility Stores Corporation Limited, Citizen Foundation और Interloop Limited एंड एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड लाहौर। ये इस वक्त जो अवार्ड दिया जा रहा है ये है सिटीजन, ये यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सिटीजन फाउंडेशन ग्रुप पिक्चर, सिटीजन फाउंडेशन
افسوس کا ماحول زیادہ لگ رہا ہے خوشی کی نسبت. جی انٹرلوپ صاحب جی انٹرلوپ لمیٹڈ, ایجوکیشنل سروس پرائیویٹ لمیٹڈ لاہور. اور اب آپ 10 کے 10 ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آپ سٹیج پہ تشریف لے آئیں فار گروپ پکچر. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ الیکٹرک, پی ٹی سی ایل, ایچ آر ایس جی آؤٹ سورسنگ, او جی ڈی سی ایل, سوئی ناردن گیس پائپ لائنز, آغا خان ہاسپٹل میڈیکل کالج فاؤنڈیشن, یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن لمیٹڈ, سٹیزن فاؤنڈیشن, انٹرلوپ لمیٹڈ اور ایجوکیشنل سروس پرائیویٹ لمیٹڈ لاہور. چودھری امیر خان پی ٹی سی ایل سے, چودھری امیر خان. تنویر کوکب اسلام آباد سرینا ہوٹل سے, یہ اختر ندیم صاحب ہیں. میں سب کے نام ذرا کوئی. مقبول الرحمان خان ایس این جی پی ایل سے, عبد الرشید صاحب او پی ایف گرلز کالج سے, غلام کبریا او جی ڈی سی ایل سے اور جاوید مسیح ٹوٹل سروس سینٹر سے. جی یہ سلیم رضا شاہ صاحب ہیں جو اب تشریف لائے ہیں سٹیج پہ. مقبول الرحمان صاحب تشریف لائیے. اس بیگ میں صرف پینشن بک نہیں ہے بلکہ بینک الفلاح کی جانب سے چھوٹے چھوٹے گفٹس اور سوینئرز بھی ہمارے ان دوستوں کے لیے ہیں. جی غلام کبرا آپ آئیے. اور جاوید مسیح. ہمارے ان 10 پینشنرز کے لیے بھی بہت سی تالیاں ہونی چاہیے. اچھا, اور مجھے ابھی بھی پتہ لگا کہ خورشید بیگم صاحبہ بھی کوالٹی کنٹریکٹر ماسٹر موٹر, کوالٹی کنٹریکٹرز ماسٹر موٹر. راوی آٹو پرائیویٹ لمیٹڈ اس وقت سٹیج پہ ہیں, اور میمن موٹرز پرائیویٹ لمیٹڈ, میمن موٹرز پرائیویٹ لمیٹڈ. ہاں, ڈیزائن انجینئرنگ سروسز کنسٹرکشن لمیٹڈ. جی آ جائیے. شوکت خانم ہاسپٹل اس وقت سٹیج پہ ہیں, اور ہمارے نیکسٹ ریسیپینٹ ہیں پی پی ایچ آئی. سرینا ہوٹل, اسلام آباد ہوٹل اسلام آباد, ایئرپورٹ ہوٹل کراچی سے نمائندے موجود نہیں ہیں. ہماری اگلی